Yes, ma'am. So now in this video we are going to learn about poultry farming, the next type of animal husbandry. So in poultry farming, generally this particular field deals with different types of egg-laying birds, fowls, chicks, turkey, etc. There are so many birds which lay eggs, and they are much in demand. You know why? Because egg is a very good source of protein, so it is very much in demand. So in this particular field, what they do, they divide them into two again categories, that is layers and broilers. Layers again, as the name says, these are those categories, these are those females which lay eggs. Okay, the female birds which lay eggs, then they are known as layers. And broilers are those which involve in the meat production. They are cut for the meat, they are slaughtered for meat. Okay. In this particular category, again, two main breeds which are used. Indigenous breed is Assi of hen or chick, and exotic breed is Leghorn. Sometimes again these two breeds are crossbreeding. Generally प्रेफरेंस भी यही रहता है कि इनको क्रॉसब्रीड कराया जाए, क्योंकि क्रॉसब्रीड करने पे हमें इनकी ज़्यादा बेहतर डिजायरेबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो क्रॉसब्रीडिंग के फायदे हैं. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच दे आर लुकिंग फॉर बाय डूइंग दिस? फर्स्ट इज नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स. The quality and number of chicks are definitely improved when two very good desirable traits include or involve. Definitely they produce something very fine. So that's the thing. Then dwarf broilers. Dwarf broilers means that the broilers should not be very tall. They should be dwarf and they should be having fat because they are much in demand. As I have already told you that broilers are those particular birds which are involved for meat production. जिनको slaughter किया जाता है मीट के लिए, तो definitely वो उनका वजन अच्छा होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होने चाहिए ताकि दे विल बी मोर डिमांड. समर एडेप्टेशन कैपेसिटी. दे शुड बी वेरी टॉलरेंट टू हाई टेम्परेचर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो इनको चाहिए. ठीक है, ताकि छोटे से फार्म में आराम से एक साथ नंबर में ही रह सके. उसके अलावा रिडक्शन इन साइज इज क्वाइट रिलेटेड टू दिस ओनली, क्योंकि बर्ड्स का नंबर साइज का जितना छोटा होगा, इफ दे आर रिड्यूस्ड इन साइज, दे हैविंग जो बॉडी से हीट का लॉस है वो सब चीजें वो कम होंगी, एंड दे कैन बी इजीली अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल रूम. सो हमेशा बर्ड्स को छोटे साइज का प्रेफर किया जाता है. देन अगेन लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स. जितनी ज्यादा बेटर क्वालिटी होती है उनकी मेंटेनेंस भी उतनी कम होती है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स दे आर ऑलवेज प्रेफर टू बी क्रॉस ब्रीडेड. Then again, like we have discussed in cattle farming, वही सारी चीजें हैं कि इनकी हाउसिंग, इनकी मेंटेनेंस, इनका क्लीनिंग, sanitation, everything should be proper. The place where they are kept should be very neat and tidy. Healthy diet मिले, खुले फार्म्स में ये आराम से रहें ताकि इनको प्रॉपर डाइट भी मिलती रहे और ये नीट, क्योंकि फैरिंग, कारकेसिंग वगैरह होती है. यू नो कारकेसिंग इज समथिंग विच इज जिसमें डेड बॉडीज का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी सीन प्रॉपर्ली. उसके अलावा प्रॉपर वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द केसेस so that they cannot be the victim of any type of disease, especially parasites. Their diet again rich in fiber as well as rich in protein. Okay? And of course vitamin A and K is also included in their diet. And क्योंकि broilers जनरली जो होते हैं उनको fat based diet दी जाती है ताकि वो अपना weight gain कर सके, so that they can have a lot of fat on their body and it can be easily sold to the market. So these are all the important features which can be seen in this poultry farming topic.